coordination compounds or complex salt. Today we are going to discuss the difference between complex salt and double salt. First of this, what is complex salt and what is double salt? Double salt formed by the combination of two or more salt. Actual salt is formed from acid plus base. When acid react with base, then salt will be obtained. You know very well about this salt. Example, acid molecule is HCl and base molecule is NaOH. Then NaCl salt will be obtained. This is known as single salt. When this type of single salt, two or more will be combined and form double salt. How double salt will be obtained? Two or more salts will combine and forms double salt. Then that salt having similar properties of its original salt. Example, potash alum. Potash alum molecular formula K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O. This is the formula of potash alum, and this is the one of the best example for double salt. This double salt is formed from one potassium sulfate and another one salt is aluminum sulfate. Potassium sulfate, aluminum sulfate, these two salts will combine and form potash alum, and this is known as double salt. And another one, complex salt, also formed from two or more compounds, and complex salt will be obtained. Example, cobalt chloride and ammonia will give one compound that is known as complex compound. CONH3 taken 6Cl3, and these two are known as salts, but this is known as double salt and this is known as complex salt. And what is the difference between this double salt and complex salt? Double salt formed from K2SO4 plus Al2SO4 thrice. Right, this is one of the salt and this is one of the salt. Then potash alum double salt will be obtained. When we perform the qualitative analysis of potassium sulfate and aluminum sulfate, after qualitative analysis, potassium sulfate gives potassium K plus ion, SO4 minus 2 ion, and this compound forms Al plus 3 ion and SO4 minus 2 ions. These ions will be obtained, and this compound gives, after qualitative analysis, same ions of its original salts. That's why this compound shows the same properties of potassium sulfate and aluminum sulfate. Means here double salt properties and the single salt properties will be similar. Here cobalt chloride ammonia combined and forms hexaamino cobalt 3 chloride complex compound will be obtained. Here when we done the qualitative analysis, CO plus 3 ion obtained and Cl minus and NH2 or NH4 plus or NH2 minus ions will be obtained. After qualitative analysis of this one, CO NH3 taken 6 plus 3 and Cl minus ion will be obtained. That means this compound does not give the similar ions of its original compound, and this salt will obtain different ions. Different ion means exactly this complex ion will be different of its original salt or original ions. This complex ion shows different properties compared to its original salts. That's why this is known as complex salt. Means इसमें जो आयन्स है सिमिलर आयन्स फॉर्म हो गए दोनों कंपाउंड में, बट यहाँ पे जो आयन्स है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो आयन्स obtain नहीं होगा, डिफरेंट आयन्स फॉर्म होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताते हैं. दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. सेम प्रॉपर्टीज बताएंगे तो वो डबल सॉल्ट होते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड double salt. And double salt का example, more salt also one of the best example for double salt.
and number of examples for complex salt. Next we will discuss complex salt examples, and another one example is K4FeCN taken 6 hexa potassium hexacyanoferrate 2 ion etc. are the examples. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लेसन में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टर्म्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. टर्म्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. Terms used in complex salts. This is the basics to understand this lesson. What are the terms used in this complex compound or coordination compound or complex salt? The first term is coordination entity, and second term is central atom, and third term is counter ion, and fourth term is ligands, and another one is fifth term is polyhedra or polyhedron. These are the terms used in complex salt. First we are going to discuss this. What is coordination entity? These are the terms used in complex compound. ये terms आपको आएंगे तो ये terms use करके हम लोग explain करना है इसको. Right. Coordination entity means, for example, already last class में discussion किया है. Coordination compound को compulsory square bracket में indicate करना है. Right. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है वो सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. द विच आयंस, विच एटम्स, टोटल एटम्स, लिगेंड, सेंट्रल एटम ऑल आर नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है वो सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है. एग्जाम्पल, starting example, K4FeCN taken 6. K4FeCN 6 one of the best example for coordination compound. तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ये पूरा एक्सेप्ट K4 को रिमूव करो तो बाकी जो है वो सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. Another example, CONH3 taken 6 Cl3. तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फॉर एग्जांपल ये दोनों कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है? यहाँ पे मेटल एटम प्रेजेंट है और साइनाइड लिगेंड्स प्रेजेंट है. यहाँ पे अमोनिया, कोबाल्ट, मींस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, that is known as coordination entity. What are the elements present in coordination entity? Means central atom present होगा and उसके साथ ये ligands coordinate covalent bond formation करेंगे. Means including ligand, central atom are known as coordination entity. Next one is central atom. Central atom means complex compound में transition element जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट इज नोन एज सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल आयन और एटम. सेंट्रल आयन बता सकते हैं, एटम भी बता सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लेस चार्ज में रहेगा वो आयन यूज करना बेटर होता है. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट इज नोन एज सेंट्रल एटम. तो यहाँ पे क्या होता है? आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पे कोबाल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट. एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लो, वहाँ पे जो मेटल
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट मेटल एटम और आयन इज नोन एज सेंट्रल एटम. Second one is counter ion. What is counter ion? Counter ion means outside the square bracket. When one complex compound is there outside the square bracket, that ion is known as counter ion. Example, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है. स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जो है वो सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, आउटसाइड जो है वो काउंटर आयन होता है. आउटसाइड में यहाँ पे क्या है, K4 potassium is counter ion, and in this compound chlorine is counter ion. Outside the square bracket is known as counter ion, and inside the square bracket is known as coordination entity, and the central atom means transition element or metal atom is known as central atom. Okay, like this is the counter ion means आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो सब काउंटर आयन्स होते हैं. K4 काउंटर आयन एंड Cl3 काउंटर आयन. मींस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 4 काउंटर आयन्स हैं, यहाँ पे 3Cl माइनस 3 काउंटर आयन्स प्रेजेंट. नेक्स्ट वन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेसन, लिगेंड्स. फर्स्ट, व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड मींस electron pair donating group is known as ligand. Electron pair donating group. Electron pair donating group is known as ligand. Means ये ligand central atom को electron pair donate करके coordinate covalent bond formation करता है. तो electron pair donating group is ligand. Ligand example, H2O, water, NH3, Cl minus and Cn minus, F minus. Number of examples are there, ligands. And here classification of ligands. Ligands classification of ligand based on the charge. First one, based on charge. Ligands are two types. Charge means positive charge and negative charge. Based on charge, ligands are two types. One is positive ligands. Three types based on charge. Positive ligands, and second one is negative ligand, and third one is neutral ligand. न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, न्यूट्रल ligand. पॉजिटिव ligand, एक्चुअली यहाँ पे देखो ligand इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव आयन होगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेंगे. बट एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, NO2 प्लस NO प्लस आर द एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव ligands. ये रेयर कॉम्बिनेशन में ligands रहेगा, बट रेगुलर कॉम्बिनेशन में नेगेटिव ligand. नेगेटिव मीन्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. जीरो मीन्स न्यूट्रल ligand है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी रहेगा. नेगेटिव ligand बेस्ट एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड आर द एग्जांपल्स फॉर नेगेटिव ligand. न्यूट्रल ligand एग्जांपल वाटर, NH3, carbonyl etc. are the neutral ligands. This is the classification based on the charge. Charge पर डिपेंड होकर ligands three types: positive ligand, negative ligand and neutral ligand. Positive ligand means ligand इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी होगा. नेगेटिव ligand means इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी होगा. नेक्स्ट, neutral ligand, there is no charge on electron donating group, those are known as neutral ligands. This is the based on charge and based on number of electron pair donation. So based on number of electron pair donating, we complete one based on charge. Next one, based on number of electron pair donation. मीन्स ये रूल तो नहीं है एक ligand एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए
रूल नहीं है, एक लिगेंड एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, इन केस one ligand having only one atom can donate one pair of electron, that is known as unidentate ligand or monodentate ligand. Unidentate ligand, that means unidentate ligand means unidentate में क्या होता है? uni means one, dentate means donating group, where donating electron donating group, that is known as that one is ligand, means one electron pair donating group is known as unidentate ligand. तो ग्रुप में ध्यान से ऑब्जर्व करो, unidentate means मॉलिक्यूल में ओनली वन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, दैट इज नोन एज unidentate ligand। वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मे बी आयन हो सकते हैं, बट it can donate only one electron pair to the central atom, and it can form only one coordinate covalent bond with central atom. Example, unidentate ligands. Example, these unidentate ligands examples are maybe positive, maybe negative, maybe neutral. Example, neutral ligand H2O can donate only one electron pair to the oxygen पे 2 lone pair रहेगा, but one electron pair सेंट्रल एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पे रहेगा, ये भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट Cl माइनस, F माइनस, Cl माइनस, दीज आर अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर यूनिडेंटेट लिगेंड। ये सब सिंपल मेटल एटम को ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके one coordinate covalent bond formation. And second one is bidentate ligands. Bidentate ligand, तो आपको unidentate समझ में आएगा तो यार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। bidentate ligand, bidentate ligands, bidentate means two, dentate means electron pair donating groups, तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो two electron pair donating groups are known as bidentate ligand. Means यहाँ पे only one molecule can donate two electron pair to the central metal atom. तो only one molecule two atoms can donate electron pair to the central metal atom. मतलब एक ही molecule में two atoms electron pair central metal atom को donate करके two coordinate covalent bond formation करें। Example, oxalate ion, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड में से 2H प्लस रिमूव होगा तो ऑक्सैलेट फॉर्म होगा। ऑक्सैलेट का शॉर्ट फॉर्म OX माइनस 2 से इंडिकेट करता है। ऑक्सैलेट C डबल बॉन्ड O माइनस दिस टू मॉलिक्यूल मीन्स एक ही मॉलिक्यूल है। ऑक्सैलेट मॉलिक्यूल तो एक ही है, ऑक्सैलेट मॉलिक्यूल C2O4 माइनस 2, तो ये मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन एटम वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और ये ऑक्सीजन एटम भी वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। दैट्स व्हाई दिस ऑक्सैलेट आयन इज नोन एज bidentate ligand. Next, another one example is organic में ethylene diamine CH2 NH2 and NH2. This is also one of the best example for bidentate ligand. Molecule एक ही है ethylene diamine, otherwise 1,2 diamino ethane, 1,2 diamino ethane or ethylene diamine. This is also one of the best example for bidentate ligand, because in this molecule two nitrogen atoms having one pair of electron. This amine group ready to donate electron pair to the central metal atom. Means
ये एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर बाइडेंटेट लिगैंड. बट ये बाइडेंटेट लिगैंड में इथिलीन डायमीन इज न्यूट्रल लिगैंड एंड ऑक्सलेट इज नेगेटिव लिगैंड. And another example, tridentate ligand. Tridentate ligand. Switch off the phone. Tridentate ligand. Third one is tridentate ligand. Tridentate में simple मीन्स मॉलिक्यूल एक ही रहेगा. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. एग्जांपल फॉस्फेट आयन PO4-3 एंड अनदर वन इज CH2 CH2 NH2 प्रोपेन ट्राइअमाइन अल्केन. प्रोपेन ट्राइअमाइन में 3 एमाइन ग्रुप से 3 एमाइन ग्रुप मेटल एटम को 3 नाइट्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. ये ट्राइडेंटेट लिगैंड. एंड अनदर वन इज टेट्राडेंटेट लिगैंड, पेंटाडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड. मतलब 1 होगा तो मोनो और यूनिट, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा etc. Example here, one of the most important ligand is EDTA. Ethylene diamine tetraacetate, one of the most important, and this is known as EDTA. Ethylene diamine tetraacetate. Ethylene. ये लिखा हूँ. Ethylene diamine tetraacetate EDTA. Ethylene diamine tetraacetate, one of the best example for hexadentate ligand. Hexadentate ligand. Hexa means 6, means this only one molecule 6 atoms donates 6 electron pairs to the central atom. That's why this is known as hexadentate ligand. Hexadentate ligand का best example EDTA full form is ethylene diamine tetraacetate. आयन होता है एक्चुअली. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथिलीन मीन्स CH2 राइट. नेक्स्ट यहाँ पे इथिलीन डायमाइन NH2 डायमाइन, इथिलीन डायमाइन NH2 ऐसे लिख लो, आपको याद रहेगा. तो यहाँ तक क्या होता है, इथिलीन डायमाइन 1,2 इथिलीन डायमाइन. बट टेट्राएसिटेट के लिए यहाँ पे क्या करना है, 2 हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना. 2 हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के बाद टेट्रा मीन्स 4 कौन सा है, एसिटेट आयन. एसिटेट आयन कब फॉर्म होगा, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH. एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करो, CH3COO-. दिस इज नोन एज एसिटेट आयन, राइट. तो ये एसिटेट आयन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए. 4 होने के लिए एमाइन में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करो, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन को रिमूव करो. 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो 4 एसिटेट आयन्स. यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन की जगह पे CH2COO- and another one CH2COO- and here also
CH2 C double bond O minus and CH2 C double bond O minus. Right? This is the structure of EDTA, ethylene diamine tetraester. एक बार ध्यान से सुनो. Ethylene means 1 to 2 carbon ethylene diamine NH2 tetraester 2 hydrogen को रिमूव किया, एस्टेट आया को यहाँ पे ऐड किया, 1 एस्टेट 2 एस्टेट 3 एस्टेट 4 एस्टेट tetraester ethylene diamine tetraester. And this is the one of the best example for negative ligand. ये important है. नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड होगा तो नेगेटिव चार्ज ये EDTA पे कितना होगा. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1 नेगेटिव साइन, 2 नेगेटिव साइन, 3 नेगेटिव साइन, 4 नेगेटिव साइन, मीन्स ये -4 चार्ज मिलेगा इसको. EDTA -4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन में 4 नेगेटिव साइन है, तो ये 4 नेगेटिव साइन होगा तो 4 ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आइटम को डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. एंड रिमेनिंग 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से फॉर्म होगा. यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी सेंट्रल आइटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके टोटल 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सेंट्रल आइटम के साथ फॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1 2 3 4 5 6 मीन्स मॉलिक्यूल एक ही इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट, बट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम्स कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज hexadentate ligand. And another one point is very important. More than one electron donating group is known as polydentate ligand. Polydentate ligand. मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप. एक डोनेट करेंगे तो यूनिडेंटेट, तो वो पॉलीडेंटेट में नहीं है. एक के बाद जो भी हो, डाइडेंटेट ligand, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट एटसेट्रा आर द नोन एज पॉलीडेंटेट ligand. मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ligands all are known as polydentate ligand or multidentate ligand. Multidentate means more than 1 electron pair donating groups are known as polydentate ligands. And another one, here another one different ligand is there, that is known as ambidentate ligand. This is the one of the important ligand, ambidentate ligand. Ambidentate ligand means ambi means 2, यहाँ पे भी 2 है, बट डाइडेंटेट अलग होता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड अलग होता है. तो यहाँ पे क्या होता है एम्बिडेंटेट लिगेंड में ambidentate is equals to monodentate ligand, not bidentate ligand, monodentate ligand. Monodentate ligand होगा, तो this monodentate ligand is known as ambidentate. Actually monodentate ligand में क्या होता है, मॉलिक्यूल पूरा में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. बट एम्बिडेंटेट ligand में ये चांसेस है, मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, उसमें एक ही एटम 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए चांसेस रहेगा. एक ही मॉलिक्यूल बट वन टाइम 1 एटम एंड अनदर टाइम अनदर 1 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी होगा. मतलब टोटल मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बट इसमें चांस है फर्स्ट एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एंड अनदर 1 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए चांसेस है. एग्जाम्पल बताता हूँ, यूनिडेंटेट है बट हियर पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2 एटम्स कैन डोनेट electron pair to the central atom and form coordinate covalent bond, but this is not occurred at a time. One atom will form. Example, thiocyanate ion, SCN, thiocyanate ion. तो ये thiocyanate ion में मॉलिक्यूल तो एक ही है, राइट. ये thiocyanate लिगेंड, thiocyanate में सल्फर मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, तो ये thiocyanate ion. बट ये मॉलिक्यूल अनदर फैसिलिटी, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए चांसेस रहेगा. तो व्हेन नाइट्रोजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम NCS, यहाँ पे
नाइट्रोजन मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो आइसोथायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट है, साइनेट क्लियर है कहाँ पर? आइसोसाइनेट, ये आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये ओनली थायोसाइनेट। मॉलिक्यूल देखो सी मॉलिक्यूल, बट हियर सल्फर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम डोनेट करने के लिए रेडी है मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करें। मॉलिक्यूल एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, बट यहाँ सल्फर या नाइट्रोजन, व्हेन सल्फर कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड टू द मेटल एटम थायोसाइनेट लिगैंड होगा, देन when nitrogen can form coordinate covalent bond to the metal atom, that is known as isothiocyanate ligand। ये कंडीशन होगा तो ये ligand को क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड ligand। HCN भी ले लो, HCN तो नाइट्रोजन डोनेट करने के लिए रहेगा, नहीं तो NC भी रहेगा, आइसोसाइनेट हो सकता है, सीन इसके जैसे ही रहेगा। नेक्स्ट अनदर वन एग्जाम्पल, another one example is nitro group NO2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी है। तो NO2 माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो ये नाइट्रो होगा, नाइट्रो लिगैंड। व्हेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, तो ये नाइट्रोजन मेटल एटम के साथ होगा तो नाइट्रेटो लिगैंड होता है। ऑक्सीजन मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी तो नाइट्रो लिगैंड। मतलब सेम मॉलिक्यूल तो NO2 नाइट्रो लिगैंड है, तो NO2 में एक बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम के साथ, एक बार नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विद द मेटल एटम, द नेम ऑफ लिगैंड विल बी चेंज। यहाँ पे थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रेटो एंड नाइट्रो लिगैंड्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। ఎన్ని నిమిషాలు వచ్చింది? ఓ అర్ధ గంట అయిందా అన్న? ఇది గింతగానం అవుతా నేను